Firstly, I'd like to welcome all our media friends for waiting. I'm sorry we had to spare off some of your very valuable time. तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ सारे ग्रुप की तरफ से। तो पहले मैं आपको इस चीज की इंसेप्शन का वजह बताता हूँ। जो एजुकेशन सेक्टर जो है पिछले हम देख रहे हैं कि 1.5 साल से थोड़ा बड़ा बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहा है। बीट शिफ्टिंग ऑफ योर करिकुलम्स और या बीट शिफ्टिंग ऑफ द सेशंस फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, और उसके बाद जो नई पॉलिसीज जो आ रही हैं उसके साथ जो हमारी इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो एक बड़ा इश्यू बन रहा है। सो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हुए, जिसमें चाहे ट्रेड के हवाले से हम बात करें, हमारे बुक सेलर्स के हवाले से बात करें, पब्लिशर्स के हवाले से बात करें, हमारे स्कूलों के हवाले से बात करें, तो हमने सबसे बात किया कि भाई आप बताएं कि बेस्ट वे क्या है, जिसमें विशन साहब हैं, सुहेल साहब हैं, हमारे पब्लिकेशन से वसीम साहब हैं, या शकील साहब हैं, हिलाल साहब हैं, हम सारे सबसे बात की। आसमान जी हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन को भी हमने ऑन बोर्ड लिया, बिकॉज इनकी राय भी लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली जो असली जो इसका स्टेक होल्डर है, जिसके लिए हम सारा ये मैदान या सारा ये जो वाजवान सजाते हैं वो हमारा बच्चा है, जो हमारे फ्यूचर का जामिन है, जिसकी हमने जमानत लेना हमारा अखलाकी और कौमी जो मिली फर्ज भी है। उस सूरत को हमने सोच के तो हमने सबसे कहा कि ये बड़ा हाई टाइम है कि कुछ जो डिसीजंस हुए हैं उसको विजिट करने के लिए हमें आपस में बैठना चाहिए, जिसकी वजह से हमने कहा कि नहीं, एजुकेशन के सारे स्टेक होल्डर्स को एक बोर्ड पर लाया जाए, जिसकी वजह से हमने ये जम्मू कश्मीर एजुकेशन वेलफेयर अलायंस बनाया, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइम के हमने पेरेंट्स को भी लिया, जो कि एक हरक्यूलियन टास्क था। आसमा जी को बीच में लाना भी बड़ा इशू है, बिकॉज ऑलवेज दे आर एडवर्सरीज टू ईच अदर, बट क्योंकि कॉमन कॉज है, बच्चे का मसला है, उसके फ्यूचर का मसला है, हमारी के फ्यूचर का मसला है, तो इस मामले में हमने इकट्ठे बैठना ही बेहतर समझा। मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए प्रेस रिलीज के लिए डॉक्टर तौसीफ, जो कि हमारे बड़े रिनाउंड एकेडमिशियन है, पीएचडी इन आईटी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो कन्वीनर है इस ग्रुप के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने प्रेस आउट को थोड़ा पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Abrar Saab. Without taking much of your time. Fine. Okay, fine. So, JK Education Welfare Alliance, it is an amalgam of Kashmir Booksellers and Stationers Association. It is JK Unaided Private Schools Coordination Committee, Kashmir School Federation Registered, Parents Association of Privately Administered Schools PAPS, Kashmir Private School Organization, supported by Kashmir Traders and Manufacturers Federation Registered. I will try to read out few of the points for which we have all assembled here. Point number 1, about the recently decision by the education authorities in the Union Territory of Jammu and Kashmir to exclusively mandate the use of educational material provided by the Jammu and Kashmir Board of School Education has sparked concern among the stakeholders invested in the future of our children. While the objective may be to standardize the educational content, it adversely restricts the choice available to the students and parents, potentially hindering the global aspiration of our youth and jeopardizing the principle of free and innovative education system. As we all know that NEP 2020 is round the corner. The new education policy NEP 2020 and a transformative blueprint designed by the central government underscores the importance of skill-based learning, leveraging game-based digital and communicative formats to facilitate holistic development. But at the same time, we must think that the books which Jammu and Kashmir Board of School Education is trying to implement on the private schools, are they in resonance? This is the question which I leave to the audience. Are they in the resonance with the NEP 2020? Secondly, do they cater the curriculum designed by the new education policy? Because the new education policy is treated to be a solution to all the problems that we are facing in the country, especially the unemployment. As we all know that Jammu and Kashmir is facing a huge crisis of unemployment, and we are, according to the statistics, we are number 2 unemployed state after Rajasthan. So NEP is considered to be one of the solutions. Point number 3, this decision also poses a significant threat to the quality of education, employment opportunities, and overall economic stability of the region. The ripple effect will be felt not only by 200 private publishers, 1,000 representatives of publishers, 3,200 booksellers, but almost 10,000 families who earn their bread and butter directly or indirectly
by the implementation of this order, their whole career and future will be at stake. Because on one hand, we are trying to provide more and more employment, more and more avenues, more and more resources for the employment. And on the other hand, we are trying to X more than 10,000 families who are directly or indirectly involved in the publication and all. Point number 4, in comparison with other union territories, because there is always a comparison between the union territories. In comparison with the other union territories like Delhi, Chandigarh, there is no such procedure, because the private, whatever the order has been implemented, it is only implemented in the UT of Jammu and Kashmir and not in the other UTs as well. And the private books are widely being used and prescribed by the private schools, and the private publishers are growing day by day. Because we all know that while we are using prescribing these published books, the authors, which has a repute all across the country, all across the world, so every parent will love to have us to to have the authors and read their books for their kids as well. Point number 5, recognizing the financial consideration, because when we talk about certain things, then the financial consideration has to be there. We emphasize that the cost of the set of the books per year is well within the affordable limit, translating to the mere 300 rupees per month. The investment in quality education is an investment in the future of our nation, and we should not compromise on the fundamental right to choose one's education path. We all are having huge stock of books. This is what publishers, the main point about the publishers is that we have a huge stock of books which we have printed in this year only, and by the implementation of this order, it will go in vain and we will have no value. Also, we have taken huge amount of loans, because every organization, whenever as far as publishers are concerned, before you proceed for the next session and all that, you have to raise huge loans from the banks so that you can fulfill the orders and all other things. We request the concerned authorities of Jammu and Kashmir Board of School Education and our honorable governor LG Sahab Shri Manoj Sinha ji, that we should be given a time period of 2 to 3 years to liquidate our stock and to recover our outstanding from the market and also loans from the bank, because it cannot be done overnight. We need some time. That's what we are requesting to the authorities, that we should be given some time. We have almost 3,000 labor staff like salesmen, accountants, packers, helpers, who are earning their livelihood by the grace of this trade. And once it'll get collapsed, they will be jobless and they'll create a problem in our society. At the same time, the private schools also face various problems in getting the NOCs, no objection certificates, from various concerned departments, and cases regarding their land records and lease deeds need to be reviewed. Each certificate takes months together, while moving from pillar to post. The moment a school gets an NOC from one department, that time the time period for another NOC passes, and at the same time the person is only the private school owner is only running from pillar to post to get one NOC, then another NOC, then another NOC. By the time he gets the third NOC, the first NOC expires. So this is the something mockery which has to be end as soon as possible. The NOC should be validated for not less than 5 years period, and the linkage department should be instructed to ease the process of assurance of various certificates. Like recently we have seen that JK Tourism has done this practice, so JK board can also follow the same practice as well. Also, the boards should not stop the facilities for want of NOCs, as they directly affected the future of the student. Now there is one more burning issue, that has been the deregistration of 125 private schools, which is a very hot issue nowadays. So we want to address that as well. At JK Welfare Alliance has strongly expressed displeasure to the unilateral decision of the education department. We believe that this move has not given a death blow to the livelihood of around 2,300 families, but also brought great inconvenience to the thousands of students studying in these private schools, because these students are really in a fix. They don't know what to do because their school has been de-recognized at this point of time. We propose that a lenient view be taken in case of these schools, and fresh lease shall be given to the schools on government land and the land belonging to the religious books like Waqf Extra, because there are a lot of people who have been associated with these schools. Somebody, a watcher of the school, who has given his life to the school. Now his school has been de-recognized, deregistered. Where should he go? Because he might be at the age of 50, 55, 60. Where will he go at this age? Where will he find this? I conclude with all this, and I will request now Mr. Wasim Saab, who is our from Kashmir Booksellers and Publishers Association, to please take forward this. Wasim Saab, please. हम इससे पहले भी आप हजरात के सामने पेश हुए थे, और आज एक बार फिर हम आपके सामने एक कॉज को लेकर हाजिर हुए हैं। हमारा कंसर्न यही है कि अगर हम इस चीज़ को, जो कि हाल ही में जे.एंड.के स्टेट बोर्ड की ओर से एक ऑर्डर आया था जिसमें वो इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, उनकी जो जे.एंड.के स्टेट बोर्ड की बुक्स है वो प्राइवेट स्कूल में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो उसमें एक तो कमर्शियल लॉस, वो तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन
एक चीज जो गौर फिक्र करने की बात है वो ये है कि एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी आर द बुक्स दैट द J&K स्टेट बोर्ड इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन प्राइवेट स्कूल आर दे इन कंप्लायंस विद द NEP। पहली बात ये है कि क्या वो किताबें NEP पे बेस है, क्या वो 2023 या 2020 में NEP आई हुई है, क्या वो उस टाइम प्रिंट हुई है, या वो वे बैक 2015, 2016, 2017 में प्रिंट हुई है। मेन चीज ये है, क्या हम अपने बच्चों के कैरियर पे कोई कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। NEP ठीक है, लेकिन वी वेलकम NEP, उसमें कोई हमारा मतलब ये कोई स्टांस नहीं है कि मतलब NEP को हम अपोज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू थिंक अबाउट द कैरियर ऑफ अवर स्टूडेंट्स, वी हैव टू थिंक अबाउट द कैरियर ऑफ अवर चिल्ड्रन। क्या कल को ये चीज हम आगे बढ़ने के बजाय कहीं पीछे तो नहीं हो रहे हैं। यू हैव ए लुक, मतलब आप देख सकते हैं कि जो J&K स्टेट बोर्ड की बुक्स है उनका आप जो अगर आप मैथमेटिक्स उठाएंगे या उनका आप अगर साइंस उठाएंगे, मैथमेटिक्स का फॉर क्लास 1 अगर हम उनका मैथमेटिक्स देखें तो देर दे वो पढ़ा रहे हैं 1 to 100। और आप सब हजरात को पता ही होगा कि आपके बच्चे भी किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वो LKG या UKG में वो चीज पढ़ रहे हैं। देर दे टॉट लॉन्ग एंड शॉर्ट, थिक एंड थिन, फार एंड नियर। तो ये चीजें फर्स्ट में क्या बच्चा पढ़ेगा, क्या बच्चा हमारा जो LKG या UKG में पढ़ रहा है क्या वो प्रमोट होने की बजाय डिमोट तो नहीं हो रहा है। ये चीज हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। और इस चीज से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट हुई थी पब्लिशिंग इंडस्ट्री से या बुक सेलिंग से, क्या वो लैप्स तो नहीं हो रही है। क्या हजारों लाखों तादाद में जो हमारे पास काम कर रहे थे या जिनकी फैमिलीज इन चीज से एसोसिएट थी, क्या वो सफर तो नहीं करेंगे इस चीज के लिए। तो हमारी यही गुजारिश है अलजी साहब से कि इस चीज पे एक जांच कमेटी बिठाई जाए और इसका अच्छे से अजाला किया जाए, इसका रिव्यू किया जाए और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए। तो कीप ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स है, इस बिजनेस के जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनके साथ एक सलाह मशवरा करके जो भी फिर गवर्नमेंट का डिसीजन हो दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन एक बार इसका रिव्यू होना ही चाहिए। एंड नाउ सर ये लंबा होते जा रहा है, प्रेस रिलीज पड़ा है, एग्जैक्टली। ये मुझे बताया आप बुक सेलर, ये मुझे बताया कितना स्टॉक आपके पास है, अगर है तो पिछले कई सालों से आप पब्लिश कर रहे हैं और सरकार ने लगातार 2020 से ये कहा कि प्राइवेट स्कूल्स में भी आप गवर्नमेंट बुक सेलर। एग्जैक्टली। तो तब से लेकर आज तक आपने स्टॉक खत्म क्यों नहीं किया और आज आप कह रहे हैं कि हमें और 3 साल नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। देखिए इट इज नॉट लाइक दैट। ये जो एक जो नोटिस आई थी J&K स्टेट बोर्ड की ओर से, वो आई थी पिछले साल यानी 2023 में वो आई थी, एंड दैट वाज ओनली मेंट फॉर 6th and 7th क्लास। इट वाज नॉट मेंट फॉर 1 to 5, इट वाज मेंट फॉर 6th, 7th क्लास, क्योंकि उनका मैंडेट था वहां पे, दैट इज वाई। और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल यूनाइटेड फ्रंट ने जो एक केस लड़ा था कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो उन्होंने J&K स्टेट बोर्ड का है, वो 6th और 7th का डिसीजन है कोर्ट का। इट इज नॉट फॉर कोर्ट का डिसीजन 1 to 8 में नहीं है, दैट यू नीड टू गो थ्रू, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन 1 to 8 नहीं है, उनका डिसीजन है 6th and 7th ओनली। एंड जो रही स्टॉक की बात, स्टॉक इट इज basic right of a publisher to print a stock. Basically, we are associated with our parent organization, that is Federation of Educational Publishers in India, and that is Ministry of HRD से वो बिल्कुल linked है एक organization। और हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है ऐसी, फिर तो हमें नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी well before, because we prepare our stock before 3 to 4 months. We'll take question answer session later. We have 5 minutes now. I will request a veteran Professor CL Vishen to please put up. Worthy audience, good morning to all of you, good afternoon to all of you, and I am very happy to see that people have come together to solve the problems of education. They are solving the problems of education at this time, not only individual problems, problems of education. I tell you that we have Supreme Court judgment PNA5. Our legal status is that the private sector in education has the full autonomy for administering their institution. The only rider is that the syllabus will be prescribed by the board, the eligibility of the teachers will be fixed by the government, nothing else, and transparency in admission policy. And 11 judges have never sat together to decide matters of education. But unfortunate part is that the governments are not honoring the judgment which has been already passed. Then, now see, when NCERT was introduced, the elite people found that NCERT was not up to the standards of their children.
They floated another organization that is called, what is that called? CBSE, in order to see that their children were properly processed through quality education. It is unfortunate that the nation is not conscious about the fact that the children of the poor are equally important, but more important than the children of the elite. There is a discrimination being done. At this time, they have put a policy of putting threat. All books will be issued by the board, and these all books are to be issued by the board with respect to only those schools which are affiliated to the JK boards. But this condition is not applicable to those which are in the CBSE or to other, which is again some total discrimination. That means they don't want that the children across the country should have equal opportunities for better quality education. अब मैं बताता हूँ उनको बुक्स क्या है, प्राइवेट पब्लिशर के बारे में बताता हूँ। आपने देखा होगा साइंस की मैट्रिक की किताब जो बोर्ड पब्लिश करता है, और उसके बाद अब एस चांद की पब्लिशर जगजीत सिंह की साइंस की किताब देखो, हर आइटम को कितना एलोबोरेट किया गया है और किस तरह से वो किताब जिस वक्त स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट की किस तरह से थ्रैशिंग हो जाती है, और एज कम्पेयर टू दैट जो वो बोर्ड की किताब पढ़ता है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। मैं कहता हूँ आई एम 90 years old, जब मैं स्कूल में पढ़ता था अर्थमेटिक अलहदा होती थी, ज्योमेट्री अलहदा होती थी, और साइंस में फिजिक्स की किताब अलहदा, केमिस्ट्री की किताब अलहदा, जूलॉजी की अलहदा होती थी, और कॉन्सेप्ट्स में इतनी एक्सरसाइज होती थी कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते। ये सारी चीजें इन्हें छोटी किताब में ढकते हैं और हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं सुबह स्टूडेंट्स का। तो चलो अब हमने इतनी देर तक ये सह लिया, मगर ये अब एक्सट्रीम हो रहा है। एक्सट्रीम इस बात का हो रहा है कि दैट वी हैव स्टार्टेड फीलिंग, जिसको कहते हैं वी आर अगेंस्ट द वॉर। अब देखिए हद ये हो गया, उन्होंने ये भी लिखा है आपको कि हम नर्सरी लेवल की क्या पर की किताबें भी पब्लिश करेंगे। ये तो कम्युनिज्म इन इकोनॉमी तो हमने देखा था, वो तो ऑलरेडी फेल हो गया। अब ये कम्युनिज्म इन एजुकेशन करते हैं, दे आर लेवलिंग आवर स्कूल्स विद द गवर्नमेंट। एंड आई टेल यू वन थिंग, प्राइवेट स्कूल स्टैंड ऑन देयर मेरिट, प्राइवेट स्कूल स्टैंड ऑन देयर क्वालिटी, एंड क्वालिटी में कंपटीशन होता है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। दिस इज व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई वांट थ्रू दिस मीडियम टू गिव अ फीडबैक टू द गवर्नमेंट दैट उनकी पॉलिसीज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उनकी पॉलिसी है फेलिसिटेटिंग पीपल, उनकी पॉलिसी है रीचिंग एवरी इंडिविजुअल टू मेक हिम टू डू हिज वर्क इन अ बेटर वे सो दैट हिज लाइवलीहुड इंक्रीजेस। व्हाट आर दे डूइंग ऑन द ग्राउंड? ऑन द ग्राउंड द होल थिंग इज रिवर्स। इसी आप देखो on the policy ground they say create jobs, and on the ground they are already existing jobs are being created. इतने publishers हैं, इतने booksellers हैं, इतने इनके employees हैं, all of them are getting the employed. Is this consistent with their broader policies? आप देखिए और एक चीज जो भी और भी है, discriminatory application of rules. NOC जो है, NOC सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड NOCs आर मैंडेटरी फॉर ऑल। क्या गरीब लड़के के बच्चे को सेफ्टी नहीं चाहिए? ये सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ही सेफ्टी चाहिए। दे आर कंसर्न ऑन, इट इज नॉट बिकॉज दे आर कंसर्न द सेफ्टी ऑफ द प्राइवेट, इट इज ओनली टू मेक अस मोर मिजरेबल। इफ गवर्नमेंट पॉलिसी इज देयर दैट दे डोंट वांट प्राइवेट सेक्टर, दे लेट देम क्लोज इट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट वी आर अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर वर्क फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। And present government is trying to encourage privatization, and what they are doing is the discourage. अब 62 schools हैं, NOC किसी किसी की कहीं रुक गई है। अगर उनकी NOC रुकने के लिए उनको डीएफिलेट किया जाता है, did they see that गवर्नमेंट स्कूलों में भी किसी की NOC नहीं है? अच्छा, लैंड कहते हैं लीज पर दे दो। कितने गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट लैंड पर हैं? क्या उन प्राइवेट लैंडों को उन्होंने लीज पर दिया? Why this discrimination is being done between the private and the? This discrimination should stop, and we want to give a feedback to the government that whatever they are really trying to help people, that is not on the ground exactly reverse of that. Let me hope that the government will. अच्छा, आर्मी गुडविल स्कूल को फैसिलिटी रिलीज हो गई, लेकिन मेरे स्कूल को रिलीज नहीं हो गई। वाई? वो तो गवर्नमेंट लैंड पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों पर अड़चने लाना, इट इज नॉट। अभी चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग की जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री से कहा आई विल एंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो इफ इंडस्ट्रीज आर बीइंग आस्क्ड टू एंश्योर, अब मैं बताऊंगा ये करते हैं ना, ये क्या कहते हैं कि वो जिसमें लोन देते हैं उसको क्या कहते हैं, उस
एक दो स्टार्टअप हो गए ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में ये लोन देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, लैंड देते हैं, सब कुछ देते हैं. वाई? बिकॉज दे थिंक दैट दे विल क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब्स. और हम तो यहाँ पर लाखों को एम्प्लॉय करते हैं. एंड आई टेल यू, एजुकेशन सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं. और हम नॉट ओनली गिविंग क्वालिटी एजुकेशन, वी आर ऑल्सो गिविंग जॉब्स. And they have to appreciate the contribution of the private school and the contribution of those connected with those private schools in terms of publishers. And quality education will not be there if there is no competition. I hope that by you are all assembling together, the voice will reach the government that they have to go back. कोर्ट से हमने रिलीफ लाया, मतलब ये हमने कोर्ट से रिलीफ लाया, उस रिलीफ को ये एक्सेप्ट नहीं करते. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एनओसी सबों के लिए मैंडेटरी है, उस पर ये हमें ऊपर लगाते हैं, अपने ऊपर नहीं लगाते. सो दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद प्राइवेट स्कूल, आफ्टर ऑल वी आर आल्सो द सिटीजंस ऑफ द सेम सॉइल एंड आई डोंट नो व्हाई दे डिस्क्रिमिनेट अस. सो दिस थिंग शुड बी put across them, and I hope that they will try. If they are sincere about doing ease of functioning, they will help us. Thank you, Professor C.L.